Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. My dear students, today we are going to discuss the topic triangles. So I hope you are getting benefited from the videos which I send you, and not only you are watching but also practicing the solutions what I solve on the board. So I prepare the video for you to solve it, not only just watch but practice it. If you don't practice the questions given in your exercise, so watching the video is not enough, not sufficient. You are not going to get any kind of benefit if you don't practice the questions given your exercise. So it's my humble request from the viewers to watch and practice the questions given in the watch the video and practice the questions given in the exercise. Without practice you can't learn mathematics. Just by watching you can't learn mathematics. Keep it in one mind. Only the practice will make you perfect in this subject. So it's my humble request, watch the video till the end and then practice the questions. That is very important. So today we are going to discuss the congruency of the triangles. So before explaining you the congruency of the triangles, I would like to tell you what the congruency of the figures means. Remember, two figures are said to be congruent if they are equal by shape and size both. I mean, if we have two figures and we observe that they are equal by size and equal by shape, then they will be called the congruent figures. I hope it is clear to you. Two figures are said to be congruent if they have equal shape and equal size. But we have to study the congruency of the triangles. So we are going to learn what are the minimum things required for the congruency of the triangles. So before understanding the congruency of the triangles, we need to know what are the parts of a triangle. In every triangle there are three sides and three angles. These are called the parts of the triangles. So I think now we can say that every triangle has 6 parts. 3 are angles and 3 are sides. Is it clear? Every triangle has its 6 parts. 3 its angles and 3 its sides. I draw a triangle and name it as ABC. So angle A, angle B, angle C are its 3 angles, and side AB, side BC, side AC are its 3 sides. One more thing I would like to explain you. After explaining that every triangle has 3 angles and 3 sides, now I am going to explain you how do we make out which angle is opposite to the which side. So this is a side named BC is opposite to the angle A. This is the side AB opposite to the angle C. This is the side AC opposite to the angle B. So I hope you are able to make out the sides opposite to the angle. Similarly, this angle, angle A is opposite to the side BC. Angle B is opposite to the side AC. Angle C is opposite to the side AB. So I hope you are able to know now 3 things. Every triangle has 3 angles, 3 sides, and there is a side opposite to every angle. There is an angle opposite to every side. So side opposite to this angle is
BC. Side opposite to this angle is AB. Side opposite to this angle is AC. So let us now understand the let us now understand the congruency which is applicable in minimum two triangles. Now I take the other triangle. I give the name of this triangle as XYZ. So we have two triangles, ABC and XYZ. Okay. So as I said, ABC has three sides and three angles. Similarly, I can say that XYZ has three sides and three angles. Okay. Now, I said that two triangles or two figures are said to be congruent if they have same shape and same size. So these will be congruent only when the triangles have the same shape and same size. Now how to make out whether the triangles have same shape and same size? If the diagrams are given, it is not practically possible to take out one triangle and compose on the other and check whether the triangles are hubahu same or not. If two triangles are equal by shape and size, then only we can say the triangles as congruent. So we are going to learn the minimum criteria required for the two triangles to call them as congruent triangles. अब हम लोग जा रहे हैं ये सीखने कि दो ट्रायंगल जिनमें कि तीन पार्ट्स साइड्स होते हैं और तीन पार्ट्स एंगल्स होते हैं, वो दोनों ट्रायंगल्स में मिनिमम क्या पार्ट्स इक्वल होने चाहिए ताकि हम कह दें कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स कब कहे जाएंगे कि दे आर इक्वल बाय शेप एंड इक्वल बाय साइज, आई मीन कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के हम लोग के पास चार टेस्ट हैं। एक एक करके वो टेस्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर दो ट्रायंगल्स के बीच में कोई भी एक टेस्ट लग गया तो हम कहेंगे कि हाँ, अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और इसलिए इनके बचे हुए सारे पार्ट्स आपस में एक एक करके इक्वल होंगे। तो चलिए पहले सबसे ये सीखें कि किस आधार पे, ऑन द व्हाट बेसिस वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आई मीन, चलिए अब हम वो टेस्ट सीखें जिनके आधार पे हम कहेंगे कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो आई स्टार्ट द कॉन्ग्रुएंसी विद द हेल्प ऑफ 4 tests, not 3, 4 tests. I start with SSS. I have used here 3 letters S, S and S. आपकी जब भी आपको पता है कि एक ट्रायंगल में केवल 3 साइड्स ही नहीं 3 एंगल्स भी होते हैं। एक ट्रायंगल में कुल मिला के 6 पार्ट्स होते हैं। सो व्हाट डज दिस सिंबल से? This symbol or this test says that if in two triangles, this and this, the 3 sides of one equal to the 3 sides of the other one by one, 3 sides AB, BC, AC are equal to the 3 sides XY, YZ, XZ, then we can say that the triangles are congruent. Is it clear? दो ट्रायंगल्स में अगर दोनों में एक एक करके तीनों साइड्स इक्वल हो गए, एस एस एस, तीनों साइड्स इक्वल हो गए एक एक करके, दिस वन इक्वल टू दिस, दूसरा ये इसके, थर्ड वन ये इसके, सो वी विल से दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो साइड्स ही नहीं एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। सो दिस टेस्ट से दैट इफ इन 2 triangles the 3 sides of one equal to the 3 sides of the other one by one, then the triangles are congruent. So here look at the diagram, you will be writing, since side AB is equal to side YZ, side BC
is equal to side XY, side AC is equal to side XZ। क्या हम लोगों को मिला इस डायग्राम से? दोनों ट्रायंगल्स के तीन साइड्स आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो कॉन्ग्रुएंसी का एक सिंबल होता है, लेट अस यूज दैट। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। ठीक, आई मीन अगर इनके तीन पार्ट्स, तीन साइड्स और तीन साइड्स आपस में इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बचे हुए तीन पार्ट्स विल आल्सो बी इक्वल। सो वी कैन से दैट इफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, if the triangles are congruent, then their three sides and three angles one by one they are equal, means corresponding sides and corresponding angles of two congruent triangles are equal। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा कि अगर दो ट्रायंगल्स के तीन साइड्स एक एक करके इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट? एंड आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी यू कैन से दैट देयर not only the sides but also angles will be equal। अब वो बाद में समझाएंगे। सेकेंड टेस्ट, let us have the two triangles LMN XYZ LMN and XYZ। Look at the letters what I have used for the SAS test. I have used here side, angle, side। I mean if in these two triangles two sides of one, let me tell you, this one and this one side equal, another one, this one। So if in two triangles two sides are equal to the two sides of the other one by one, and the included angle, in between the included angle is L, in between the included angle is Y, and the included angles are also equal in two triangles when the two sides of one equal to the two sides of the other and included angles are also equal, then also the triangles are congruent। यानी इस बार तीन साइड्स नहीं, दो साइड्स और एक बीच वाला एंगल अगर दो ट्रायंगल्स के इक्वल हैं तो भी ट्रायंगल्स congruent। So since एंगल L equals to एंगल Y, एक एंगल मिल गया, साइड LM equals to side YZ, side LN equals to side XY। इसमें भी तीन चीजें मिली, बट दैट थ्री थिंग्स आर टू साइड्स एंड वन एंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल LMN, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ऐसे होता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। दूसरा टेस्ट मैंने समझा दिया। पहला टेस्ट क्या कहा था? अगर तीन साइड्स पहले के दूसरे के तीन साइड्स के बराबर हो वन बाई वन, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरा मैंने क्या कहा? अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स उनके बीच के एंगल आपस में एक एक करके बराबर हो, देन आल्सो द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ थर्ड टेस्ट, what is third one? AAS or ASA, AAS or ASA। अब मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। लेट्स हैव टू ट्रायंगल्स
ABC, PQR, पहले नाम देख लीजिए क्या है, एंगल एंगल साइड, आई मीन टू एंगल्स एंड वन साइड। यहाँ पे क्या है, साइड किनारे में है, यहाँ पे साइड क्या है, दोनों एंगल्स के बीच में है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सो आई हैव टू ट्रायंगल्स एंड इफ आई सी दैट an angle equal to an angle of the other, another angle is equal to the another angle of the second triangle. So I see that two angles are equal, and then one more thing, if I see the side opposite to this BC is same as side opposite to this, I mean if I see that two angles and one side equal to two angles and one side, these are the sides opposite to the equal angles, which are called the corresponding angles. So I'd like to tell you, in two triangles the corresponding angles means, अगर आपको नहीं पता है तो बता रहा हूँ, in two triangles the corresponding angles, I am not saying that alternate angles, corresponding angles, in two triangles the corresponding angles means the angles opposite to the equal sides, or corresponding sides means the sides opposite to the equal angles. तो इस ये एंगल इसके बराबर है, अगर इसके सामने का साइड और इसके सामने का साइड दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हो गया और दो दो एंगल्स इक्वल हो गए, देन वी विल से दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS टेस्ट। ये वाला नहीं, एंगल एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड, एंगल एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड। सो सिंस एंगल A equals to angle R, angle B equals to angle Q, side BC equals to side PQ, therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR. So this is AAS test. Now what is ASA? ये भी तो दो एंगल एक साइड है, जैसे ये दो एंगल एक साइड है, but this is different. How is this different? The side is in between the angles. So here I draw another diagram to make it more clear. In these two triangles PQR and XYZ, if you see that two angles, angle Q equals to angle Y, angle R equals to angle X, and the side between the angles, this one is equal to the side between the angles, this one. Here two angles and one side, two angles and one side of these two triangles are equal, but the test of this name will not be angle angle side, this name will be ASA, because side is in between the angles. So we will be writing, since angle Q equals to angle Y, angle R equals to angle X, and side QR equals to side XY, therefore by ASA, instead of AAS we will call it as ASA, therefore by ASA triangle PQR is congruent to triangle XYZ. So three tests I have made it clear. Now I am going to the fourth test of the for the congruency of the triangles, and that is RHS. That is RHS. RHS stands for right angle, hypotenuse and one side. So let's have two right angle triangles. Let us say that the hypotenuse are equal and one side equal. So some of you think that this test is SAS, side, one more side and one angle. So some of you call it as SAS. No, my dear students, this will not be SAS. SAS stands for two sides and बीच वाला एंगल, ये दोनों साइड्स के बीच में एंगल ये है, ये कहाँ इसके बराबर है. So this
here we see that the three parts of this equal to the three parts of the other, but these parts will be called as RHS, not SAS. So in these two triangles, since angle B equals to angle Q 90, side AB equals to side QR, side AC equals to side PR, which is hypotenuse. Therefore, by RHS test, triangle ABC is congruent to triangle PQR. अब आगे चलते हैं. The last thing which I will explain you about the congruency, which is very important. Look at the diagram which I draw here. If we see that in two triangles, either side angle side or RHS or AAS or SSS are equal, then we said that the triangles are congruent, and then when the triangles are congruent, corresponding sides and corresponding angles are equal. इस डायग्राम को ध्यान से समझिए. अगर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना है तो कोई एक टेस्ट में पास होना होगा, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रिजल्ट क्या निकलेगा उसके बाद? उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. अब रह गया कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग साइड्स, फिर से बताता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स. करस्पॉन्डिंग साइड्स वो साइड्स होते हैं जो दो ट्रायंगल्स के इक्वल एंगल्स के सामने होते हैं. जैसे डायग्राम देखिए, अभी मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला है, मैंने बस बोला है कि ये एंगल इसके बराबर है. ध्यान से सुनिएगा. तो ये और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कहे जाएंगे, ये और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कहे जाएंगे, ये और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कहे जाएंगे. सो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर. करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स. उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स, अगर मैंने कहा कि ये साइड इसके बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. अगर ये साइड इसके बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स मीन्स ये वाला एंगल इसके सामने, ये इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाएंगे. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स. सो मैं क्या बोल रहा हूं? इफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. आई मीन, एक बार फिर से समझाता हूं, आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइएगा. ए बी सी पी क्यू आर, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं? इसके तीन साइड इसके तीन साइड्स के रेस्पेक्टिवली बराबर हैं. देखिए कौन? ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके बराबर है. तो इस टेस्ट से, SSS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने क्या लिखा? करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो साइड्स तो पहले से इक्वल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल. यानी मीन्स एंगल ए किसके सामने है? BC के.
इज इक्वल टू, BC के इक्वल कौन है, PQ, तो एंगल R, एंगल A विल बी सेम एज एंगल R। फिर ये किसके सामने है, AC के, AC किसके बराबर है, QR के, QR के सामने कौन है, P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल P। अगर मैं पूछूं कि एंगल B किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर B यानी AC के सामने, AC किसके बराबर है, QR के, तो QR के सामने P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल P बिकॉज द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर मैं पूछूं C किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर C के करस्पॉन्डिंग, C किसके सामने था, AB के, AB किसके बराबर है, PR के, तो PR के सामने Q, तो एंगल C करस्पॉन्डिंग टू Q है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल Q होगा बिकॉज इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब तीसरा कौन बच गया, BC के बाद एंगल A, इसमें PQ के बाद कौन बच गया, एंगल R। सो इन टू ट्रायंगल्स, इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आज हमने क्या सीखा, देयर आर 4 टेस्ट फॉर द कॉन्ग्रुएंसी and the congruency says that the sides and angles, corresponding sides and corresponding angles of the congruent triangles are equal। और congruency का सिंपल मीनिंग क्या है, congruency का सिंपल मीनिंग है ये है कि दो फिगर्स को congruent कहेंगे अगर वो by size, by angles, by size, by shape, everything they are, by everything they are same। So we will do the questions based on the congruency of the triangles in the next video. Wait for the video to come. Don't forget to like, subscribe and share the channel. Bye bye.